ओके, नाउ स्टार्टिंग विद डेरिवेटिव्स। सो मुझे क्विकली बताओ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हम लोग क्यों निकालते हैं डेरिवेटिव्स, क्या यूज था डेरिवेटिव्स का? कोई भी लाइक स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम का जो था वो डिफरेंस वो निकालने के लिए। ओके, और भी कुछ बताया था मैंने? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट जैसे पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई पूछेगा नहीं तुमसे, बट स्टिल तुमको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव्स हम लोग क्यों निकालते हैं, डेरिवेटिव्स का इंपॉर्टेंस क्या है। सो लेट्स से कोई कर्व है, एक पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, इस टेंजेंट की अगर मुझे स्लोप निकालनी है तो वो होता है इस पॉइंट पे डेरिवेटिव। ठीक है, अब स्लोप सबको पता होगा, m इज इक्वल टू tan थीटा, राइट? सो m इज इक्वल टू tan थीटा, सो ये tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से मिल जाती है। ठीक है, एंड फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, सॉरी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, करेक्ट? Okay, to start with, let's quickly calculate the derivative of square root of sin x. ओके, सो अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से मत करना, पहले मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताओ, जो नॉर्मल हमने डेरिवेशन डिफरेंशिएशन सीखा था उससे। ऋतु इनकरेक्ट, सनत इनकरेक्ट, स्मेरा स्मेरा करेक्ट, ऋषित करेक्ट, ग्रेट। Okay, so the ones who have got correct answer, try to calculate the derivative using the first principle. सर मुझे एक And छोटा कॉन्सेप्चुअल हम्म डाउट है। हम लोग हम्म चेन रूल तभी यूज करते हैं जब वो स्क्वायर या मतलब एक पावर होता है ना, वरना नॉर्मल डेरिवेशन ना। हाँ हाँ, मैं और आज हम और चेन रूल पे पढ़ने वाले हैं तो और उस पे क्लियर हो जाएगा। अभी इसको एक बार इग्नोर करो, हाँ ये समझ लो कि जब भी पावर आती है तो वी यूज चेन रूल। ठीक है, ओके, एंड जो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर पाएगा उसके लिए वापस से चॉकलेट। सनत इनकरेक्ट, आदित करेक्ट,
ओके गाइस, टेल मी वन थिंग, क्लास के बाद तुम लोग नोट्स का रिवीजन करते हो या नहीं करते हो? आई मीन जो भी नोट क्लास में पढ़, हाँ, हाँ, जनरल प्रैक्टिस you do it just after the class, or I mean the day on the class happened, or some days back, कुछ usually I do it The just next day. the next day. Okay, I'll tell just you one because for thing. Yeah. So जिस दिन हम लोग क्लास करते हैं ना, उसके शाम में तुम 15 मिनट लगा के बैठ जाना, 15 मिनट में पूरी 3 आवर्स की क्लास का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने ये शायद सेम क्वेश्चन ही ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में सॉल्व किया था, बट स्टिल देयर आर पीपल जो अभी भी इसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो सनत एंड रितु, योर आंसर इज स्टिल इनकरेक्ट। We had done a question of sine square x, so अगर वो करेक्ट किया था तो ऑब्वियसली रूट ऑफ sin x भी सेम ही मेथड से सॉल्व होगा। Okay, so I'll tell you how to solve this question. We have sin x का square root, that means we have to calculate sin x to the power half, correct? So मैंने बताया था power is the most important thing. So what we'll do is we'll take this to be capital Y to the power half. Now how do we differentiate this? We first differentiate y with respect to y. So that means it is 1 by 2 and y to the power 1 by 2 minus 1 into d capital Y by dx, right? So this is 1 by 2, y was sin x, and the power becomes minus 1 by 2. So 1 by 2 times 1 by square root of sin x into y का value था sin x, so it's d sin x by dx, correct? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगर ये नहीं समझ आया तो चेन रूल नहीं समझ आएगा। सो बेटर है अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। विल डू 2-3 मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। यस संस्कृति, अर्नव, सनत, सर नहीं समझ आया, ओके। और किसी को? I got it. ओके ठीक है। सो मैं एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। सो दिस इज 1 by 2 into square root of sin x, d by dx of sin x is cos x. So this is the final answer for this question. अच्छा चलो अब वापस से इसको लॉजिकली समझते हैं। सो हम लोगों को कैलकुलेट करना था स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, दैट मीन्स ये है साइन एक्स टू द पावर हाफ। अच्छा हमें साइन एक्स का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना आता है, दैट इज कॉस एक्स, राइट? What I'll do is I'll take this to be some other function, let's say y, capital Y. Now capital Y to the power half. So what I have to do is मेरे को इसका d by dx निकालना था, तो मैंने sin x को y मान लिया। So basically मुझे अब क्या कैलकुलेट करना है? d by dx of capital Y to the power half. To make this differentiation easier, मैंने बोला कि मैं पहले कैपिटल Y को कैपिटल Y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, कैपिटल Y की पावर हाफ को मैं कैपिटल Y की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। एंड व्हाट आई डू इज आफ्टर दिस आई डिफरेंशिएट d कैपिटल Y विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये देखते हैं मैथमेटिकली कैसे करेक्ट है। सो d कैपिटल Y और d कैपिटल Y कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विद इज d कैपिटल Y टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय dx, और यही हमें कैलकुलेट करना था, राइट? सो दैट मींस ये मैथमेटिकली करेक्ट है। सो मुझे क्या करना है, पहले पावर पे जाना है। सो इट विल बी, अच्छा ठीक है, y कैपिटल Y टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा मुझे बताओ y के रिस्पेक्ट में, अर्नव? वन अपॉन साइन नहीं साइन नहीं, y की टर्म्स में बताओ।
√5. 1/2 2 नहीं आएगा. Yes. So 1/2 कैपिटल y टू द पावर जो भी उसकी पावर है -1. यही करते हैं. x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन इज nx टू द पावर n -1. सेम वे यू आर गेटिंग दिस. सो ये कर लिया. इसके बाद मुझे क्या करना है, कैपिटल y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. कैपिटल y कौन सा फंक्शन था? sin x था. सो दैट मींस d/dx of capital Y. So capital Y is in sin x, so this is sin x, right? So y की वैल्यू पुट कर दो. So y was sin x, so this becomes 1/2 into 1 by square root of sin x into d/dx of sin x. So sin x का differentiation with respect to x is what? Yes, anybody? Cos x. Cos x. Okay, ठीक है. So this comes out to be cos x/2 root sin x. चलो ऑन अ सिमिलर बेसिस. अच्छा, जिनको ये नहीं समझ आया था वो एक क्वेश्चन और कर लो. Rest of the people can do that question from first principle. ठीक है. So the ones who did not answer that question correct, उनके लिए एक और क्वेश्चन है. Let's say okay, tan x the whole square. The question is for Arnav, Ritu, Sanat, Sanskriti. Yeah, that's all. Okay, Sanat correct. Rishit correct. Okay, nice, Ritu correct. Yes, Arnav and Sanskriti is still not able to figure out. So 1 second, trying it out. All right. देखो कुछ नहीं करना है. Assume this tan x का होल स्क्वायर है. So फंक्शन क्या है? tan x है. I'll take this function as y. तो कैपिटल y का होल स्क्वायर. वो dy/dx नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दो उसको. क्या समझना है? इसका डिफरेंशिएशन करना है सबसे पहले. तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? 2 कैपिटल y. फिर मुझे y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. या फिर ये भी नहीं समझ आ रहा है तो एक लास्ट चीज बताता हूँ. अज्यूम कर लो अंदर कोई फंक्शन ही नहीं है. ठीक है, अज्यूम करो अंदर x वाला फंक्शन.
तो तुमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, राइट। एक्स की जगह आप क्या डाल दो, tan x डाल दो, ठीक है, क्योंकि अंदर तो tan x है। इसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो tan x का विद रिस्पेक्ट टू x, so tan x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट, sec square x, so this is the final answer, 2 tan x sec square x. ओके, लास्ट क्वेश्चन अर्णव, एक बार और ट्राई करो इस क्वेश्चन को, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3। मैंने क्या बोला था, अंदर जो भी फंक्शन है उसको x मान लो, इसकी जो पावर है वो x को असाइन कर दो, x का जो भी पावर है उसको उससे डिफरेंशिएट करो एंड देन डू द डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला टर्म, दैट्स ऑल। Yes, anybody who is able to figure out square root of sin x का differentiation using first principle? No. I'm getting stuck. Can I tell you I'm getting stuck? No, you should not get stuck in that because that is limit का problem. Right, of course. और अभी हम डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, तुमको लिमिट्स में दिक्कत आ रही है, गाइस थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। So I'm not getting how you'd write that as like root. Which root? This question? No, the first method. Say. Okay, solving square root of sin x using first principle. You're not getting that. Yes, Arnav. Yes, so 1. वर्बली ट्राई करो सॉल्व करने की, तो मुझे भी पता चलेगा कि तुमको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली। Okay, so like, so it's given root 2x plus 3, right? So, so we can take 2x plus 3 whole bracket 1 by 2 as the power. Yeah, so this is 2x plus 3 to the power 1 by 2. सबसे पहले what we do is power का differentiation. I mean, we look at the power. So how will you manage power for this particular function? So Okay, Arnav, first tell me what is the differentiation of square root of x? 1 by 2. 1 by 2. Okay, can I write this as x to the power half? Yes. Achha, also we know that x to the power n ka differentiation is nx to the power n minus 1. Try to apply this formula in this particular function. N की value half है, so बताओ क्या आएगा ये function? Okay, so 1 by 2x the power minus 1 by 2. Correct. 1 by 2 to x to the power minus 1 by 2. So can I write this as 1 by 2 and square root of x in the denominator? Yes. Okay. On a similar basis, when I try to differentiate 2x plus 3 with respect to half, what I consider is कि अंदर कुछ भी नहीं है, and I try this, I just differentiate the power. So what I get is 1 by 2, 2x plus 3 to the power minus 1 by 2, same as square root of x. Yes. What is the additional step which I have to do is I have to multiply 2x plus 3 का differentiation with respect to x. ठीक है, पहले यहाँ पे x था,
अब x की बजाय कोई एक और फंक्शन है, हमको क्या करना है, हमको नॉर्मली इसको वैसे ही डील करना है जैसे हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, बस हमें ये जो इनर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. So what is the differentiation of 2x plus 3 with respect to x? 1. 2x plus 3. अच्छा, what is the differentiation of 2x with respect to x? Okay, before that, what is the differentiation of x with respect to x? 1. 1. ठीक है. Now I add a constant. I mean, I multiply a constant to x, so I get d by dx of 2x. So I have, like, we did a property ki constant comes out of the differentiation. So 2 times of d by dx will be how much? 2, because differentiation of x is 1 and you multiply 2 to it, right? Yes. So this is 2 and d by dx of a constant, since 3 is a constant, so uska differentiation will be 0. Yes. So 2 plus 0, that means 2 is the answer for differentiation of 2x plus 3. Yes. So I have to multiply this, and what I get is 2x plus 3, this 2x plus 3 to the power minus 1 by 2. This 2 and 2 gets cancelled out, and what I'm left with is 1 by square root of 2x plus 3. Yes, I got it. Yes guys, first principle हुआ या नहीं हुआ? चलो ठीक है. Square root of sin x का करना था, right? What is the first principle? The first principle says limit h tending to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. Quickly tell me what is the function f of x plus h? ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो क्या कि f of x plus h क्या होगा? So will h also come under the root? Like that's the doubt I have. अच्छा ठीक है, पहले ये समझो ये चीज कैसे वर्क करती है. सो वी हैव फंक्शन ऑफ x प्लस h. तो इंस्टेड ऑफ x एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली फंक्शन आर f of x, राइट? सो जो भी वेरिएबल टर्म है यू हैव टू रिप्लेस दैट टर्म विद x प्लस h, द वेरिएबल इनसाइड दिस. ठीक है. So that means square root of sin x was the function. अब x की बजाय I have to replace x with x plus h now. So the function will be sine of x is replaced by x plus h. Okay, so it becomes sine of x plus h minus f of x. F of x is what? Achha, this is square root 2. F of x is simply sine x. So this becomes sine x divided by h. अच्छा, अब इसका लिमिट्स कैसे इनके लिमिट्स कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट्स में? सर आप क्या वापस एक बार एफ एक्स प्लस एच वाला पार्ट रिपीट कर सकते हैं? एफ एक्स और एच तो समझ ही गया, बट वो एफ एक्स प्लस एच वाला नहीं समझा. अच्छा चलो, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है. मैं तुमको बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के बताओ, तो क्या कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर का करूंगा. Let's say this is x plus x square. ये फंक्शन है and f of x is x plus x square and you have to calculate f of x square. So how do we do it? Is see x के रिस्पेक्ट में ये फंक्शन है, अब मुझे x स्क्वायर निकालना है. तो इस फंक्शन में जहां जहां भी x है उसकी जगह मुझे x स्क्वायर रखना है, ठीक है. तो x की जगह मुझे क्या रखना है? x स्क्वायर. तो ये हो गया x स्क्वायर. अब ये x की पावर 2 है यहाँ पे, दिस इज x स्क्वायर, दैट मींस x द होल स्क्वायर, राइट. अच्छा, इसको ऐसे नहीं समझो, कंफ्यूज हो जाओगे. तो अगर मुझे f ऑफ x स्क्वायर निकालना है तो मुझे हर जगह जहां जहां भी x है वहां पे मुझे x स्क्वायर रखना है. सो दैट मींस x की जगह मैंने रख दिया x स्क्वायर. अब ये x कैपिटल ब्रैकेट में है, आई मीन x स्क्वायर को यू कैन राइट एज x टू द पावर 2.
x को मुझे रिप्लेस करना था x square, so this will be x square to the power 2. So this is x square plus x to the power 4. On a similar basis, अगर f of x is let's say x plus 3, then how do you calculate f of x plus h? x की जगह क्या रखना है? x plus h रखना है. So x यहाँ पे है, x की जगह मुझे रखना है x plus h, and what I get the function as is x plus h plus 3. That's all. So we leave it there. Now we don't do anything to it, right? After it. No. You don't have to do anything with it. It's basically So a you- function inside a function. Yeah. It's in this step, like you were saying, uske baad you were saying now you can continue. Sorry, which step? So you were mentioning like before you did try to explain this part, like you were mentioning like we had to use limits or something. Yeah, you have to calculate limit of this function. तो कैसे निकालोगे limit? Square roots में क्या हम method follow करते थे? There is only one method we use. हाँ? Rationalize करते हैं क्या? Exactly, rationalize करते हैं. तो rationalize करो numerator को. But sir, if we Yes. rationalize the numerator, won't like we get this like in the denominator? Yeah, but the numerator will be sine x plus h minus sine x, right? And then you can apply sine c minus sine d. So we cannot leave it here. We need to simplify it more using Of sin course. c minus. Square root of sine x, तो तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए guys. This answer, half of cos x divided by square root of sine x. Differentiation तो हर जगह से सेम ही आएगा ना. So हमने ये नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट किया. फर्स्ट प्रिंसिपल से भी वही आना चाहिए आंसर. किस से नहीं सॉल्व हो रहा है अभी भी? हैंड रेस कर दो. ओके. ये मतलब ऐसा नहीं सॉल्व नहीं हो रहा, बस आप मतलब बेसिकली f of x plus h में हम लोग ने ओनली x को sin x को वो x को we just changed it to x plus h. Is that Exactly. what the logic is? The logic is कि अरे see, f of x का मतलब क्या होता है? You know the meaning of f of x? Function of x. Function of x, exactly. So let's say you have a polynomial function. Let's say function of x is x square plus 2x. ठीक है? Now अच्छा ये तुमने कई बार देखा होगा कि function of y को हम लिख देते हैं y square plus 2y. ये कभी नोटिस किया है?
जैसे पॉलिनोमियल में तो ऐसा ही होता है। चेंज ऑफ वेरिएबल। अब ये होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो फंक्शन ऑफ एक्स सेज दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दैट मींस पूरा फंक्शन एक्स की टर्म्स में मिलेगा, ठीक है। व्हेन आई राइट एफ ऑफ वाई इट मींस फंक्शन ऑफ वाई, सो दैट मींस पूरा फंक्शन हमें वाई की टर्म्स में मिलेगा, राइट। सो बेसिकली एक्स की जगह तुमने वेरिएबल क्या चेंज कर दिया? वाई कर दिया, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की जगह अगर मान लो तुम्हें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो तुम क्या करोगे? जहां जहां भी एक्स है उस वेरिएबल को चेंज करके एक्स स्क्वायर कर दोगे। सो एक्स स्क्वायर है, एक्स को मुझे रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर से, तो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया। अब एक्स का पावर था 2, सो एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 के साथ था एक्स, एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो सो अगेन दिस बिकम्स 2x स्क्वायर। So the final function f of x square will be x to the power 4 plus 2x square. गॉट इट। Oh. Yes, मैं सॉल्व कर दूं या कोई किसी से सॉल्व हो रहा है? Limits. Ritu has done it. You have got the final answer. Same as that answer. Nice. Yes, Adit. Smera, So, Sanat. Yeah. चलो ठीक है, रेशनलाइज करते हैं। So when I do rationalization, first I'll write the function. It was limit h tending to 0, square root of sine of x plus h minus square root of sine of x divided by h, right? And rationalization का मतलब is multiply with the opposite of the sign. So that means I'll multiply and divide with ये step सबको clear है? You multiply and divide with these terms. yes. So in the numerator, in the numerator, can we do a square minus b square? So what do we get is sine of x plus h minus sine of x divided by h times square root of sine of x plus h plus square root of sine x, correct? Yes or no? Any doubts till this step? Sir, I got till this. Sir. Okay, great. So इसके बाद sin c minus sin d, अच्छा फॉर्मूला नहीं आता है क्या? देख लो सर, ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स खोल लेते हैं जल्दी से। sin c minus sin d याद नहीं आ रहा है, खोल लो जल्दी से दो। अच्छा कौन बताएगा sin c minus sin d? ऋतु का हो गया ना, ऋतु बताओ व्हाट इज sin c minus sin d? 2 sine c minus d upon 2 and cos c plus d by 2. Okay, 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2. So when I apply that formula, what I get is 2 sin x plus h minus x by 2. That means h by 2, 2 sin h by 2 times cos of c plus d by 2. That means x plus h plus x by 2. So that is 2x plus h by 2. Right? So this is 2 sine h by 2. Acha, you have h in the denominator, h times square root of sine of x plus h plus square root of sine x. Acha, now h tends to 0. So can I say that sine of h by 2 divided by h by 2 का limit 1 होगा, क्योंकि sine x by x का limit 1 होता है when x tends to 0. Right? So साइन के अंदर वाला एंगल इज टेंडिंग टुवर्ड 0, अब मुझे वो सेम एंगल डिनोमिनेटर में चाहिए होता है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डिवाइड दिस बाय 2 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 2,
So can I write this whole term as 1? Yes or no? Yes, sir. Okay, so this whole term becomes 1. This 2 and 2 cancels out. What I have is, मैंने h को अब 0 डाल दिया है. So what I have is x, जहाँ जहाँ भी h है मैं वहाँ 0 रख सकता हूँ. So what I get is cos of 2x plus 0 by 2. That means 2x by 2, which is x. So cos of x divided by square root of sine of x plus h. H becomes 0, so this will be square root of sine x plus square root of sine x. So when you solve this, you get cos of x and square root of sine x. When added 2 times, you get 2 times of square root of sine x. So first principle अगर किसी को नहीं आ रहा है, मतलब उसके लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या लिमिट्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं. So on a similar basis, try one more question. Try differentiation of square root of 2x plus 3. The same question which we did right now. Square root of 2x plus 3 का differentiation with respect to with the first principle, of course. And you have 3 minutes to solve.
Yes, guys, any answers? Well, almost there. Ritu incorrect, Smera correct. अच्छा, even you can check your answers by doing the differentiation using the chain rule. दोनों से differentiation तो same ही आना चाहिए ना, of course. So I did that and my answer matches it. I've just like rationalized and sent it. But still, So 2 is extra. I mean, you're getting square root of 2x plus 3 divided by 2 times of 2x plus 3, right? So your answer should, like, answer would be 1 by 2 square root of 2x plus 3. So could you repeat? Your answer would be 1 by 2 square root of 2x plus 3. You're getting this, right? Square root of 2x plus 3 divided by 4x plus 6. That's your answer? Yes. Like So, you multiply like, okay. What I'm doing is, can I write the denominator as 2 times of 2x plus 3? yes. Yes. So I can write this as 1 by 2 square root of 2x plus 3. Oh, I just like multiplied that and got Yeah, like so when you 4x plus still 6. this 1 by 2 is extra, that should not come. The final answer is 1 by square root of 2x plus 3. So this is what this 1 by 2 is making your answer wrong. Okay, so the ones who have answered correct, एक बार chain rule से भी try कर लो, same ही answer आ रहा है क्या? Okay, Rishit, you tell me what will be the value of f of x plus h for this particular function? root 2x plus h plus 3. Great, correct. So instead of x, what we have to do is we have to just put x plus h. So f of x plus h will be square root of 2 times x plus h plus 3, right? And f of x is, of course, the same function, square root of 2x plus 3. Using the first principle, I can write the equation as limit h tending to 0. This becomes square root of 2 times of x plus h plus 3 minus square root of 2x plus 3 divided by h. वापस से square roots आ रहे हैं, so what I do is I rationalize the numerator. I'm not doing all of these steps again. When I rationalize the numerator, what I get is 2h, right? 2h, yes. And in the denominator, I get h times square root of 2 times of x plus h plus 3 plus square root of 2x plus 3. Am I correct or am I correct? Yes, sir. Okay. So this becomes limit h tending to 0 and this h and x cancels out. So h का function ही नहीं है. I mean 0 by 0 form नहीं है, तो अब h को 0 डाल सकते हैं. So if I put h as 0, what I get is when I put h as 0, I get 2 divided by, this will be square root of 2x plus 3 plus, since this is not a function of h, so this becomes square root of 2x plus 3, right? So this is 2 divided by 2 times 2 and 2 cancels out. This becomes 1 divided by square root of 2x plus 3.
Okay, who were not able to solve this question? So I took like the wrong function. I took like 2x plus 3 plus h. Great. I got it by chain rule. No, but I said now you have to calculate by this first principle. I don't know. I mean, like you said, now afterwards, you check if you get the same thing by chain rule or not. So I was just confirming that. Okay. But you were able to solve using the first principle as well, right? First principle also. So can you give another question like that? Okay. Okay, let's do it for sine square x. सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं चाहिए सर, वैसे लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आप ट्रिग्नोमेट्री दे दे के और बढ़ा रहे हो. अच्छा, अब फाइनल आंसर तुम लोग चेन रूल से टेस्ट करके ही बताना मेरे को, ठीक है? तुमको ऑलरेडी आंसर पता है तो मेरे से वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है, अगर चेन रूल आता है तो. एंड गाइस, आई एम अगेन एंड अगेन स्पीकिंग, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो पूछ लेना, क्योंकि ये 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो नहीं समझ आएगा तो 12th में टीचर पक्का से ये बोलेगा कि 11th में तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो फिर वो वाला सीन नहीं क्रिएट करना है. इसे हम लोग sin x to the power होल स्क्वायर ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, राइट. एंड ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस भी याद होने चाहिए. sin c minus sin d, sin c plus sin d, cos c minus cos t, cos c plus cos t.
Acha, anybody who could tell me what will be f of x plus h? Except Rashid now. Sine x plus h whole square. Correct. Okay. Sir, I'm very confused by the answer I got. Arnav, your Oh wait, I ans- can check it by chain rule. I forgot. Yeah, you can check it by chain rule, and also Arnav, h का term कैसे आ रहा है? h tending to 0 होता है ना? So h को तो तुम 0 put कर सकते हो. सर वो h x plus h का f is equal to f upon x plus. अच्छा, okay, तुम f of x plus h का आंसर कर रहे हो. Yeah. All right. So मुझे एक डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन में आपको जो न्यूमरेटर में 2h मिला था was that because आपने मल्टीप्लाई किया था 2x plus h ब्रैकेट में या you got it when you simplified it? क्या किया था आपने? I did a square minus b square. Now, when I rationalize, I get a minus b times a plus b. So that will be 2 times x plus h plus 3 minus 2x plus 3. So when you solve this, you get 2h. Okay. Simply calculating after rationalizing, that's all. Anybody who has got the correct answer using the first principle? Sir, I forgot ki like the question has square in it, so I just use sine like sine c minus sine d. Guys, So I have to you're gonna redo it. be. Yeah, I have to redo it now. So I'll write the first statement. So that is limit h tending to 0, sine of x plus h the whole square minus sine of x the whole square divided by h. तो मैं डायरेक्टली h को 0 पुट कर देता हूँ. 0 by 0 फॉर्म होगा तो ही सॉल्व करूंगा. h को 0 पुट कर दूंगा तो दिस विल बी sin of x whole square minus sin of x whole square divided by 0. So 0 by 0 फॉर्म तो है. अच्छा, ये नहीं कर सकते क्या यार? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं. 0 I got 1 it. 0, 0 1 0, so answer is 1. ऐसा नहीं होता है क्या? क्यों? कितना इजी हो जाता अगर ऐसा होता तो. लिमिट्स की जरूरत ही नहीं होती है. ऐसा tell me the next step after this. सर क्या आप रिपीट कर सकते हैं You इसके can use आगे a आपने square क्या कहा? minus b square, right? Yes, Anand, correct. Yes, Rashid. तो कैन यू टेल मी आपको ये माइनस साइन कैसे मिला? कैन यू जस्ट रिपीट दैट? F of x plus h minus f of x divided by h. The first principle. Okay, never mind, I found my mistake. So after this, you have to use a square minus b square. And उसके बाद sin c minus sin d. बस अब इससे ज्यादा hints नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही में सॉल्व कर लूंगा.
Okay, so the next step after this is sine of x plus h minus sine of x times sine of x plus h plus sine of x divided by h. करेक्ट. अच्छा, अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में केवल इसमें जीरो डाल दूं h को, so will that be an indeterminate form? This will be sin x plus sin x. So this function is already sorted. इसमें कुछ नहीं करना है बेसिकली, केवल इन ये जो फंक्शन है इसमें हमको कुछ लिमिट्स वगैरह करना है, कुछ फंक्शन को मैनिपुलेट करना है, एंड विल गेट अ लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन. ठीक है. सो इसके बाद व्हाट आई हैव टू डू इज यूज sin c minus sin d. So can you repeat what you did with the second term? I didn't understand. Okay, see, sine of x plus h plus sine of x. If I put h as 0, what I get is sine of x plus sine of x. Of course, that's not Yeah. an indeterminate form. That's not a 0 by 0 form. Yeah. So that Oh, means okay, this okay, okay. particular function is sorted, right? So इधर तो मैं h को डायरेक्टली 0 डाल सकता हूँ, मुझे केवल इस फंक्शन को सॉल्व करना है. So इसके including बाद the अगर मैं h, sin, yeah, sorry, including the h like in the denominator, that no, also we I'm need not to taking. see. That is why I've taken this h in this part. देखो वैसे तो 0 by 0 form है ना. This particular function is 0. 0 times anything is 0, and in the denominator it's also 0. But when we are solving, we can break this into parts. क्योंकि एक फंक्शन 0 में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिमिट निकालने का कोई सेंस नहीं है ना, उसको मैनिपुलेट क्यों ही करेंगे हम. So if I use sin c minus sin d, what I get is 2 sin c plus d by 2. So that will be x plus h by 2 cos c minus d by 2. Divided by h. Okay, sorry, I used the wrong formula. So you used the wrong Cos. formula. Yeah, my bad. Ulta hoga na, it'll be Mm-hmm. sin c minus d by 2 and cos c plus d by 2. And इसके लिए I can write limit h tending to 0. For the other thing, I can write ki if I put h as 0, I get that as sine of x, like sine of 2x. So that will be 2 sine x. Sine x added to sine x 2 times. Smera correct, Ritu correct. Is it using the first principle or the chain rule? First principle. Principle. Great. Finally. So इसके बाद it's just that h by 2 का term है, तो I'll create h by 2 का term in the denominator. So I can write this whole thing as 1. And for the rest of the function, if I put h as 0, I get 2 sine x. If I put h as 0, this 2 and 2 cancels out, I get cos x. So 2 sine x cos x is the final answer. But so वो sin x वाला तो एक minute. हाँ, that तो became 1 ना. So how do you This get sin becomes, x? this sine x came through this function, na? Sine of x plus h plus sine x. Oh, हाँ. Okay, got it. So is 2 sin x cos x as the same as sin 2x, because I heard it somewhere. You heard somewhere, but this is a formula. You should remember this. ये मत बोलो sir, I've heard somewhere. This is a formula. You should know this. Okay. It's correct, na, though, but Yes, the sine formula. 2x is also correct. Yeah. Trigonometry कब पढ़ा था last? Sir, So if 2-3 we साल get तो an हो ही answer गए like this, हैं. do we have to convert it into sin 2x? It's your choice. It depends on the options. अगर MCQ में है, else you can leave it in 2 sin x cos x. That is also correct. Okay. But if you know the formulas, of course, Sir. sin 2x is flexing that formula. ठीक है? Sir, हमें cos x मिला because we put the value of h as 0, right? In cos x plus h by 2 में. Yes. Okay.
Should we do one more question on this or should we move on? One more. अब finally सब correct answer करना है please. मैं ही solve कर रहा हूँ सारे questions. चलो बहुत easy सा question देता हूँ मैं. सब solve कर लेंगे. Do you guys know formula for tan A minus tan B? Tell me. Tan of A minus B is different. Tan A minus tan B is different. Okay. First of all. चलो ठीक है. So next question is x sin x. I'll give you 7 minutes to solve this question. Well, I think tan A minus tan B का तुमको formula नहीं बताया होगा because that converts into sin A, sin B, cos A, cos B, something like that. Yeah, that's what I was going to say, that we could divide it into like sine by cos. अच्छा नॉर्मली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को? कौन सा रूल लगाएंगे x sin x के लिए? d by dx. D by dx is of course the differentiation. I'm asking which rule. UV, like x is Yes. U, sine is V. Correct. So technically x is a constant, right? So it'll just come आगे. No. X is not a constant. X is a variable. उसके रिस्पेक्ट में तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. When we say d by dx, it means differentiation of that function with respect to x. So x जैसे जैसे change हो रहा है, वो function कैसे change हो रहा है? That is what we are calculating. So do we have to use the first principle or the UV wala formula? Of course, the first principle. So these first principle wale But I questions will have be a doubt. One second. Yes, Adit. Okay. First principle वाले questions. for more marks ना मतलब technically the same question which Correct. can be solved will be 3-4 Correct. marks. मैं बताता हूँ एक चीज जो हमने चेन रूल पढ़ा है ना, that is not in your syllabus for your 11th class. तो 11th क्लास में they are assuming कि तुम्हें केवल लिमिट्स आता है और तुम सारे क्वेश्चंस उसी से सॉल्व करोगे. तो अब मैंने तुमको एक ट्रिक बता दी है कि जो फाइनल आंसर है वो तुम पहले ही कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग चेन रूल या प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल. ठीक है. So when you get the final answer from the first principle, you can verify that answer from this particular approach. And also if you get this Sir. particular question, एक मिनट, let me complete. Also if you नहीं get सर, this एक question, सेकेंड, आपने जो बोला ना वो एक्चुअली है हमारे स्कूल में. इवन अगर ये एग्जाम में नहीं आ रहा, हमारे सर ने लाइक मैथ सर ने हमें ये चेन रूल वेन रूल सब सिखाया है. okay. So 11th की NCERT में नहीं है वो चीज, तुमको एग्जाम पेपर में भी नहीं पूछा जाएगा. I mean if you solve this using chain rule, that approach is wrong according to 11th grade. ठीक है. ओके.
हमारे I don't इसमें know कि तुम्हारे दो स्कूल में you are allowed to use chain rule or not. You can ask your respective teachers for that. सर यहाँ पर 2x है तो इसमें क्या x+h sin x+h होगा? Correct. चलो ठीक है, या तो इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर लेना, बिकॉज लिमिट्स में मे बी दिस क्वेश्चन कैन गो अ बिट लॉन्ग। या ट्राई करोगे, बताओ। So how would you put this into like sine c plus sine d if it has like x plus h in front of one of its term? हाँ, so I can't use that formula over here. So we Or can use rather, product. you can use product rule, but of course that's not the first principle. Product rule आया first principle से। और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। लिमिट्स इतना सारा हमने पढ़ा था यार, 2 क्लासेस करी थी लिमिट्स की। साइन a प्लस बी भी तो यूज कर सकते हो, साइन a cos b प्लस cos a sin b। हमेशा एक अप्रोच से मत सोचो। सर आपने 2 क्वेश्चन तो सेम अप्रोच पे दिए, तो ये वाला भी सेम पे ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत मैं भी डिफरेंट दे देता हूँ। So can we divide by x ऊपर and नीचे? Yes, that is allowed. No, but would it be right in this question? Allowed तो बहुत सारी That चीजें। you have to figure out. X से divide करना is allowed. सर तो अना रितु ने भी पूछा है, बट ये हम लोग साइन सी माइनस साइन डी ही यूज करना है ना इसमें? करके देखो, साइन सी माइनस साइन डी यूज करो, मे बी उसके बाद कहीं अटक जाओगे।
अच्छा sin c plus sin d अप्लाई किया या नहीं किया? I haven't used that. ओके यू कैन नॉट। अब मैं यूज करके सर बताता हूँ नहीं कैसे कर यूज पा कर रहा। सकते हैं। मैं यूज करके बताता हूँ। चलो एवरीबॉडी सॉल्व करना छोड़ दो, स्क्रीन पे आ जाओ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा? एक्स प्लस एच टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स एज इट इज होगा एक्स साइन एक्स। अब मैं वो लिमिट विमिट नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना वही चीज है, ठीक है। सो इट्स एक्स प्लस एच टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स divided by h. Correct? From the first principle, I'll expand this bracket. So what I get is x times sine of x plus h plus h times sine of x plus h minus x sin x divided by h. Correct or correct? Correct, right? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, इसके बाद what I'll do is yes. Instead of doing like expanding the bracket, could you like make it like two separate fractions? Like you have x plus h, sine x plus h upon h, and then like x sine x upon h is separate. Yeah, but And how will then- you solve this? I mean, x sin x divided by h है, ठीक है? H tending to 0 है. So this will be something divided by h because x is not tending to 0, h is tending to 0. X remains same. So how will you That's solve when this I got limit? stuck. Yeah, so x sin x by h will be infinite because h is tending to 0. So that means you are approaching it in the wrong way. Okay. So after this step, what I'll do is I'll try to merge these two terms. I'll take x as a common factor. So if I do this, what I get is it will be x times sine of x plus h minus sine x, right? Divided by, okay, plus h times sine of x plus h and divided by h. ठीक है, अब यहां मैं sin c minus sin d यूज कर सकता हूं। I'll separate the terms. I can write this as limit h tending to 0 because हमने algebra of limits पढ़ा था। f of x plus g of x can be separated as limit x tending to 0 f of x plus limit x tending to 0 g of x. सर 4 महीने हो गए उस बात को, अब तो पता नहीं, याद भी नहीं है। So sine of x plus h minus sine of x divided by h plus limit h tending to 0 h sine of x plus h divided by h. यहां तक कोई डाउट है? ये h और h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस वाले में मैं क्योंकि लिमिट डिपेंड ही नहीं कर रही है h पे, आई मीन इफ आई पुट h as 0 आई गेट sin x, सो पॉजिटिव ऑफ sin x, ये लिमिट तो डायरेक्टली सॉल्व हो गई। इस लिमिट में sin c प्लस sin c माइनस sin d लगाना पड़ेगा। सो व्हाट आई गेट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 x times sin c minus sin d, so that will be 2 times of sin c plus d by 2, sin c minus d by 2, so that will be h by 2 cos c plus d by 2, so that will be x plus h by 2 divided by h. Again from the first question till the third question हम वापस से यही कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, this whole term becomes 1. As I put h tending to 0, 2 and 2 cancels out. If I put h as 0, I get x cos x. Because h is 0, so x plus 0 will be 0. So this is x cos x plus sin x. Sundar Sushil answer, right? Right.
एंड गाइस ये मत सोचना ये क्वेश्चन टफ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है साइन एक्स वाला। तुम ये सोच रहे हो कि क्लास में थोड़ा लेवल ऊपर चल रहा है एनसीईआरटी से, तो नहीं, ये एनसीईआरटी का लेवल है, स्कूल में आ सकता है। तो दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन लिमिट्स। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल समझ तो आ गया वो कैसे अप्लाई करना है, रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आई मीन यू नो लिमिट्स, you know how to apply first principle, that is the best I can do, rest is your practice। ठीक है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना, जो भी क्वेश्चन करो उनको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने का भी ट्राई कर लेना। तो दैट्स एक क्वेश्चन के लिए यू कैन डू मल्टीपल अप्रोचेस। All right, I can change the slide or not? Cool, अब बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं हम लोग। That like this is the part which I like the most for differentiation, which is the chain rule। तो चेन रूल तो आप पहले भी बोल रहे थे, बट यार एक्चुअल चेन रूल अब चालू हो रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। सो चेन रूल is for functions like f of gx। f of gx टाइप के मतलब फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन is where like this is where we apply chain rule। So अगर मुझे d by dx निकालना है इस particular function का, that is if I have to calculate the differentiation of f of gx, what I do is I first differentiate the outer function। outer function कौन सा है, f वाला। So you start from left to right। सबसे पहले कौन सा फंक्शन मिला, लेफ्ट में हम आए तो हमको f वाला मिला। So I have to differentiate f dash gx and then I have to differentiate gx। पहले बाहर वाला फंक्शन, फिर बाहर वाला फंक्शन कीपिंग द इनर फंक्शन एज अ कांस्टेंट, एंड देन g dash x, दैट मींस डिफरेंशिएटिंग द इनर फंक्शन। ओके, सो सर ये f of gx क्या होता है, f of gx मैं बताता हूँ क्या होता है। लेट्स से साइन ऑफ x स्क्वायर है, sin square x is different, sin of x square is different, the angle is now x square। so normally कोई फंक्शन होता है तो that is sin of x, right? f of x is equal to sin of x is a normal function। let's say there is some other function g of x which is equal to x square। okay, so if I have to calculate f of gx, what I do is x की जगह I have to put g of x। मैंने x की जगह g of x put कर दिया। so function is sin of x, x की जगह मुझे g of x put करना है, so that will be sin of g of x, correct? g of x function क्या है, x square है, so that means f of g of x will be sin of x square। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर बहुत बहुत इजी लॉजिक है, समझ सकते हैं इस चीज को बहुत इजीली। लेट्स से a function f of x is square root of, let's say, sin of x, ठीक है, and I say you to calculate, okay, and let's say one function g of x is square root of x, so what will be f of g of x? root sin x root x। Perfect, root sin x I mean root not x, root sin x ने root sin root x। root sin and x की जगह I have to put g of x, since g of x is root of x, so this will be root sin root x, correct? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो f of gx का मतलब तो समझ गए सब लोग, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने का वे देखते हैं। so we have to calculate the differentiation of sin
x square. ठीक है, so दो फंक्शन तुमने आइडेंटिफाई कर लिए. फर्स्ट फंक्शन इज sin x, the other function is x square. What I do is सबसे बाहर वाले फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ. बाहर वाला फंक्शन है साइन ऑफ समथिंग. सो साइन ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन मुझे पता है कॉस होता है. साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस. नाउ कॉस ऑफ g ऑफ x, मैंने बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया कीपिंग द इनर फंक्शन एज कांस्टेंट. सो दिस विल बी cos of x square, right? After this, what I have to do is I have to differentiate the inner function with respect to x. So x square का differentiation will be what? 2x. पहले बाहर वाला फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन cos, keeping the inner angle as constant. x square का x square ही है वो. ठीक है, into 2 of x into differentiation of x square which is 2x. चलो एक और एग्जांपल करते हैं. d by dx of let's say sine of square root of x. So बाहर वाला फंक्शन is again sine का फंक्शन. So sine का डिफरेंशिएशन is cos. Square root of x remains as it is. पहले तो मेरे को बाहर वाला फंक्शन करना है. अंदर कितने भी फंक्शन हो मुझे उससे मतलब नहीं है. सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है. So that is cos. Angle remains as it is. अब इनर वाला फंक्शन is square root of x. तो अब मैंने ये सब कर लिया. स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन आई नो इट इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x. एक और लेट्स से d by dx of e to the power 2x. What is the outer function now? E. E. Exactly. E to the power x का differentiation is same as e to the power x, right? So e to the power x का differentiation मेरे को पहले करना है क्योंकि वो outer function है. So e to the power x का remains as it is, and now this e to the power x is 2x. So gx को मैंने अभी constant रखा है and e to the power 2x is the differentiation. Now I have to differentiate 2x with respect to x. What is that? That is 2. 2. So 2 e to the power 2x is the final answer. Okay. एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो. अच्छा, इंडिविजुअली लेट मी असाइन वन क्वेश्चन एंड चलो आदित्य से स्टार्ट करते हैं. आदित्य, tan of 2x को कैसे सॉल्व करोगे? इसको डिफरेंशिएट करना है. सर Don't do सबके it लिए on लिख दीजिए spot. ना, फिर जल्दी से कर देंगे. नहीं, तो यही तो नहीं करना है मेरे को. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि तुम किस लॉजिक से आंसर ला रहे हो. Yeah. And we can take tan as the outer function. Okay, so differentiation of tan is what? Square x. Sec square x. So x की बजाय I have to put the inner function. So that means sec square 2x Bracket. Then you have to take the inner one, the 2x one. so differentiation. Yeah. E2. Perfect. So sec square 2x times 2 is the final answer, right? Right. All right. Okay. Moving on. Ritu. Yes, Ritu. The question is e to the power x square plus 7x. First, we'll differentiate the outer function, which is e to the power x square plus 7x, which will remain Exactly. e to the power x square plus 7x. Then we'll differentiate x square into x square plus 7x. So that will be 2x plus 7. Great, correct. बहुत easy है ना? बहुत easily solve हो जाता है. कोई बात नहीं. चलो और करते हैं d by dx of let's say sine of cos x. Yes, Mera. Yes, sir. So first we'll write cos of bracket cos x Correct. into the differentiation of cos x, which is minus sin x. Perfect. That's the final answer. Great. Nice. Moving on. Give me a second. So moving on, we have Sanat. Yes, Sanat. What is the differentiation of log of 2x plus 3? So first we take log, like the outer one, which is log. Correct.
उसका डेरिवेटिव आई डोंट नो. You don't know? Yeah, इसमें I can't help. That is a major problem. If you don't know the derivatives, that is a major problem. सर लॉग का नहीं पता. लॉग का देखो, हमने लिखा है फॉर्मूला, इसमें चेक करो. 1/x. 1/x. So अच्छा, 1/x 1/x. से आप बताओ सनत, इसके बाद क्या लिखूं मैं? उसके बाद you write the inner part as it is. So 2x So plus that means 1/2x plus 3, right? yeah. Times Times like the inner wala part ka derivative. So 2x plus 3 ka derivative, what is that? which will be 2. Yeah, only 2. 2. Okay. चलो, अब सबसे सॉल्व हो रहा है तो थोड़ा सा टफनेस लेवल इंक्रीज करता हूँ ऋषित के लिए. ऋषित, द क्वेश्चन इज साइन ऑफ cos of log x. cos log x, cos एक मिनट, धीरे धीरे minus धीरे sine 1 by धीरे. x. रुक जाओ भाई, रुक जाओ, धीरे धीरे बताओ पहले क्या कर रहे हो, उसके बाद आगे चलेंगे. हाँ तो साइन बाहर लेते हैं तो cos, ठीक है. फिर आप सेम cos लिख और लीजिए अंदर cos. सारी सेम टर्म्स लिख देता हूँ. हाँ ठीक है. cos of हम्म, cos, अच्छा cos of log x. इसके हम्म. बाद फिर आई थिंक cos वापस बाहर लेना है और log x को सेम रखना है. इज इट दैट? yes it is that. यार सही सोच रहे हो. हाँ, करेक्ट. तो माइनस साइन log x ठीक है. and then 1 by x. ग्रेट. करेक्ट. किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स. सबसे पहले आउटर फंक्शन पे गए. आउटर फंक्शन वाज साइन. साइन का डिफरेंशिएशन वी डिड कॉस. अंदर से हमें कुछ मतलब ही नहीं है, अंदर को एज इट इज रख दिया. सो कॉस ऑफ लॉग एक्स इज एज इट इज. उसके बाद वी वेंट टू द इनर फंक्शन. ये वाला फंक्शन सॉर्ट हो गया. इनर फंक्शन पे गए. कॉस. कॉस के अंदर जो भी है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मुझे कॉस का डिफरेंशिएशन करना है. कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन. अंदर जो भी था वो एज इट इज लॉग एक्स यहाँ पे आ गया. कॉस का फंक्शन हो गया. उसके बाद दी लास्ट फंक्शन इज log x. log x के आगे कुछ नहीं है तो log x के आगे 1/x. ठीक है. log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x. So we don't have to solve it past like this, No, right? no, 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 no. You don't have to solve this. Okay. Let me go to the next function. Yeah. So next we have Sanskriti. Sanskriti, the question is x plus 4 to the power 5 minus 1 to the power 4. Okay. So first we'll take the I derivative. can't hear you. So can you hear me now? Yeah. So first we'll take the derivative of x plus 4. अच्छा चलो ठीक है. एक बार ये क्वेश्चन चेंज करता हूँ थोड़ा सा. Let me first. Okay, tell me the differentiation of sine of log of x square, because वो वाला जो क्वेश्चन था उसके लिए एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए. हाँ, sine of log of x square का बता दो. So first we'll take the derivative of sine, that is cos, Okay. and in bracket we'll keep log and x square as it is. All right. Then we'll take the derivative of log, that is 1 by x. So for 1 by x. So x की जगह आप क्या है? x square है. so for x, instead of x we'll write x square, Cool. and then we'll take the derivative of x square, that is 2x. Great. ठीक है. Okay. Last question. Arnav. यार क्वेश्चन ही खत्म हो गया पता है. Yes.
Okay, Arnav, the question is d by dx of cot of log of 5x cube plus 3x. Yeah, okay. So cot's differentiation will be minus tan x. No, cot ka differentiation is different. Yes, anybody? Cot का differentiation क्या होता है? Minus cos. Cosec square. Minus cosec Yes, square cosec x. square x. Okay, so Arnav, cot का differentiation is minus cosec square x. So how should I write this? Minus cosec square. Then whole bracket log and the inner part. Okay, the all terms inside this 5x cube plus 3x. After this, Yes, so then a log ka differentiation will be 1 upon 5x cube plus 3x. cool. Then into 5x cube plus 3x differentiation will be 15x square plus 3. Nice. Great. All of you have done correct. Nice, nice. Easy था chain rule, बहुत easy है. अच्छा, आप इसको chain rule क्यों बोलते हैं? किसी को कोई बता सकता है? Why do we speak this as a chain rule? Because Why we chain are rule? like using it in a chain, right? Exactly. Like, See एक this. करके terms use. Right. I'm coming to the drawing part. So let's say this function is first part of the chain. This is the second part, third function. ठीक है? So पहले हम इस function को करते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर इसको करते हैं. So all of them are connected to each other. So that is why it makes kind of a chain. So इसको इसलिए हम बोलते हैं chain rule. Okay. चलो और पढ़ लेते हैं थोड़ा chain rule. Yeah. So let's say अगर मुझे differentiation करना है sine of 2x the whole square का, तो मैं कैसे करूंगा? You will differentiate sine 2x and then Power like first. Okay, Like Ritu 2 incorrect. sine 2x, then into sine 2x का differentiation, is it that? Exactly. मैंने बोला था power has the highest priority. So sin 2x का whole square है, तो power अगर आ गई तो power के आगे कुछ नहीं देखना है. सबसे पहले power को हम कैसे differentiate करते हैं? Let's say ये function कुछ y है, so हम ये कर देंगे 2y capital Y. और अब तुम्हें समझ आ गया होगा internally तुम इसको y ले सकते हो, तो मैं सीधा कर दूंगा इसको as I can directly write this as 2 sin 2x, right? इसके बाद हम sin 2x का differentiation करते हैं. अब sin 2x में हमारा चेन रूल वो f of gx वाला काम आ जाएगा. तो sin 2x का डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? आउटर फंक्शन इज sin, sin का डिफरेंशिएशन इज cos, अंदर वाला एंगल रिमेन्स एज इट इज. आफ्टर दिस द इनर फंक्शन इज 2x, 2x का डिफरेंशिएशन इज 2. So sir, the previous one, like the one where Adna solved it, was like 15x square. Like that, you left it at that. You didn't like differentiate it the whole way. Which question? Next page. Next page. Previous or next? Here, the last Okay. one. Like 15x square plus 3. You didn't differentiate it further. So the final function was 5x cube plus 3x. इसमें थोड़ी कुछ power है. Had it been 5x cube plus 3x the whole square, then I'll first go to the power and then I'll move to the function. Are you getting what I'm trying to say? 5x cube plus 3x का power क्या है? That is 1, right? The inner function has power 1. So power नहीं है तो I'll directly go to the function. Function का differentiation मैंने कर दिया 15x square plus 3 से. चलो रुको, एक और बार समझते हैं. Let's say it is tan of 15x square plus 2
the whole square. हाँ चलो ठीक है, एक बार ये सॉल्व करते हैं. सो अभी पूरे फंक्शन पे पावर नहीं है, केवल एंगल पे पावर है, राइट? tan of something and a square on that. So outer function is tan of something. Outer function is tan. So tan का differentiation will be sec square and the inside term will come as it is. So it becomes 15x square plus 2 the whole square. So no it's x not there, right? Yeah, my bad. So this is sec square of 15x square plus 2 the whole square. After this I go to the inner function. So inner function is 15x square plus 2 the whole square, right? Whole of the function has the power. So power aa gaya, when power comes into play, power has the highest priority. So power ko pehle I'll differentiate. So I'll do this as 2 times 15 x square plus 2, correct? I've managed the power now. After this I'll go to the function. 15x square plus 2 का differentiation क्या होगा? That will be 30x plus 1. Normally भी देखो, अगर 15x plus 2 का whole square का अगर हमको differentiation करना है तो we do it using that capital Y square. We assume it to be some other So function. just 30x, right? No Not 1. 12. Yes, okay. All right, you got the concept Anand, now? Yeah. I had a doubt. Could you use the chain rule for that x sin x? Yeah, whatever the question was. No, how will you use that? See, I said chain rule is used for f of gx. This is not f of gx. This is one function times one function, correct? A function multiplied with a function is obviously solved using the product rule. Yes or no? Okay. Okay. Okay, let's again start with Adit. And Adit, the question is, So we're doing the same type questions again, right? yeah, with the power now. All right, Adit, so question is cot of 2x plus 3 the whole square. Okay, so we start off by taking cot as the outer function as minus cosec square, and then you just write the same function again, like the other one, as it Okay, is. done. Then the next thing you multiply it by 2 into 2x plus 3, like the x function, like the whole. Perfect, great. And then the last one will become, you take the inner function itself directly, so that will become 2. Great. Anything after this? No, we leave That's it there. it. Perfect, nice. Ritu, there's a small change in the question. The question is cot of 2x plus 3 the whole square and a whole square upon this as well. So first you'll have 2. Then you'll multiply it by minus cosec square. And then the inner bracket as is. Okay. Then you'll multiply it by 2. The and then same you put things the come here. function. Yeah. Okay, nice. Sir, I had a doubt. Yeah.
So the whole of it was 2, right? So wouldn't we first write 2 into cot 2x plus 3 the whole square and then Oh, yes. cot Oh, my bad. I missed that part. Right. Yes. Ritu, you didn't say तो that or I एक didn't चॉकलेट write that? माइनस I did not. It didn't occur to me. अच्छा, तो माइनस किसके लिए यार? बताओ. चलो ठीक है, 7 - 1 6 चॉकलेट्स तो दे दो यार एटलीस्ट. फिर ऋतु की पहले वाली चॉकलेट कैंसिल. हाँ ठीक है, तो स्टिल so this will be 2 times cot of 2x plus 3 the whole square. That's it. All cool. yeah, And then multiplied with this. समझ गए ना? ठीक है. So चलो अब कुछ अच्छे फंक्शंस लेते हैं. Sine of yes, smear. Let me correct this function. No, I don't use brackets properly. चलो ठीक है. 2 and then the whole thing is same, sine log bracket cos then 2x plus 3 whole square multiplied by cos log and then cos 2x plus 3 the whole square Okay, multiplied by cos. I'm not writing the whole function, guys. बहुत बड़े functions है, ठीक है? तो तुम समझ जाना. Yes. multiplied by 1 upon cos 2x plus 3 the whole square Okay. multiplied by 1 upon minus sine 2x plus 3. Why 1 upon minus sine? But then how will we do that? Cos again. नहीं तो you did log का differentiation ना? So log के बाद you came to the inner function. So Okay, so into minus sine 2x plus 3 the whole square correct. into 2 bracket 2x plus 3 Right. into 2. Great. इतना बड़ा आंसर है, बताओ. खुद पे प्राउड फील नहीं हो रहा है क्या तुम लोगों को कि सर इतने बड़े आंसर्स हम वर्बली सॉल्व करके निकालते हैं? सर इसी खुशी में एक और चॉकलेट माइनस. चलो कर दो यार, तुम लोग को चॉकलेट्स नहीं देनी है तो ठीक है. सर मजाक. यार क्वेश्चन ही खत्म हो गया, पता है ये स्कीम अब चल नहीं रही. सर सोचो हम इतने स्मार्ट निकले कि क्वेश्चंस ही खत्म हो गए. हाँ एक्चुअली यार, but this method is good. Individually asking each and everyone तो सबको समझ भी आ जाता है and we practice a lot of questions. So you gave a question earlier, but then you erased it, saying that we can. But I don't remember that question because I gave it on my own. It's why I've written the question. I have noted the question. Okay, तो बताओ क्या question था? Sir, x plus 4 to the power 5 minus 1 whole to the power Okay. 4. ठीक है, तो संस्कृति तुम ही बता दो क्या होगा इसका आंसर. Sir, I'm not able to understand. That's why I'm asking. चलो तो सनत right. बाय टर्न. सनत था, सनत तुम बताओ. Okay, so first we'll write 4 because it's on like the outer power, and then we'll write the Correct. entire same thing, like x plus 4 to the power 5 minus 1. Okay. Then we will. अच्छा इसका क्यूब नहीं होगा क्या सनत? सर क्यूब क्यों होगा? 4 तुम आगे लाए तो x to the power n भी तो होता है. Oh हाँ, right, sorry. हाँ, after this
Now we will open like the x plus 4 wala thing. So it'll be 5 into x plus 4 to the power 4 minus 1. -1 सर 1 का क्या होगा? 1 तो कांस्टेंट है ना. तुम पहले पावर के बाद अच्छा हाँ, इनर it'll become फंक्शन पे 0. है, ये It'll पूरा become 0. फंक्शन है. फिर फंक्शन Yeah. पहली बार तुम इसका x plus 4 to the power 5 पे, तो उसका डिफरेंशिएशन इज 5 times x plus 4 to the power 4 minus differentiation of 1 with respect to x is 0. That'll be 0. I thought like we'd carry 1 till the end. I forgot we have to like differentiate that also. Yeah, but that is not f of gx. It's just the power and you have a function inside it. Yeah. So after that, Yeah, after this. हो गया ना. तो तुमने थोड़ा लेट फिगर आउट किया, हो गया था पहले. हाँ, मुझे लगा like थोड़ा और होगा. The brackets are too confusing. सर x plus 4 का कुछ नहीं होगा. x plus x 4 plus to the 4. power अच्छा 4. हाँ, देखो तो x plus 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होगा ना. तो वो One. टेक्निकली Yes, वो 1 sir. मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, बट दैट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, तो इसलिए नहीं किया मैंने. आई डोंट नो सनत, तुमने ये फिगर आउट किया था या नहीं किया था, बट एक्चुअली x plus 4 का डिफरेंशिएशन इज 1. अब तो सन बोल देगा यस सर मैंने किया था, और मैंने ये भी कैलकुलेट कर No, लिया था no, कि I टाइम्स didn't. 1 इज सेम. I didn't. Like I understood ki how it's 1, but I didn't calculate it for me. Wait, how is it 1? Could you explain? व्हाट इज dy dx ऑफ x plus 4? यार ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो. x plus 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? But नहीं, but to the power 4 उसका कुछ नहीं होगा. अरे तो x plus 4 to the power 5 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करा, वो हो गया 5x plus 4 to the power 4. करेक्ट. पावर मैनेज हो गई, देन वी गो टू द फंक्शन. फंक्शन इज x plus 4, तो डिफरेंशिएशन तो x plus 4 का ही करना है ना केवल. Okay, yeah. चलो ऋषित, तुम्हारा ही टर्न है. अब तुमको कुछ टफ सा सवाल देता हूँ. I had a very nice problem. I'm finding out that okay, so many powers. Everyone try this, because that is the hardest problem which I have on this powers wala game. अच्छा चलो, एक और अपॉर्चुनिटी इस क्वेश्चन के साथ. अगर ये क्वेश्चन सही सॉल्व कर दिया ना, तो तुम्हारी सारी चॉकलेट्स, बस फिर नो चॉकलेट टॉक्स. तो ऋषित थोड़ा सारा सर like थोड़ा सा अगर कहाँ पर एक दो जगह गलती हो गया तो just बोल देना. नहीं 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 थोड़ा नहीं, सा ये अब कुछ अलाउड ज्यादा नहीं पूछना. नहीं. सर लास्ट में क्या है? होल टू द पावर 7. ओके. तो गाइस एवरीवन, अगर ऋषित ने गलत आंसर किया तो तुम लोग देख लेना किस किस को चॉकलेट देनी, क्या देनी, क्योंकि ऋषित के हाथ में ही है अब तुम्हारी चॉकलेट्स. यस ऋषित, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 7. 7. You write everything. Okay, let me write everything first. And then this to the power 1 second, 6. 1 second. So first this power is 6 plus 3 to the power 6. Okay. Now let's take the inside again. We will put 6 into everything which is there inside the bracket plus Okay, 0. into 1 second, into 6 everything inside the bracket, so that is 2x plus 1 to the power 5 plus 2 and plus 0 to the power 5 अच्छा, to also. the power 5 also. Okay.
Yes, and then wait, and then you do 2x, I mean 5 into Okay, 5 into 2x to the 2x plus 1 to the power 4 okay plus 0. plus 0. All right, so this looks like this. Okay, let me make that plus sign. After this, Just 1 minute, let me just think. And then chocolate cash. Yes, yes, yes. After this, रितु is praying literally यार, इतना मतलब chocolates दे दोगे तो कुछ होगा नहीं ऐसा. No, no, I'm like done. I finished. So, Yes, yes, Rashid. wait, we now get to differentiate just 2x plus 1, so it would be 2. Sure, all Wait, कुछ but नहीं. This is your let me just completely see properly. I'm not gonna confirm yet. Okay, I confirm. I think this is correct. So guys, I have my chocolate.